अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से एग फ्राइड राइस विद मंचूरियन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले आप ले लें बोनलेस चिकन और उस बोनलेस चिकन में आप सबसे पहले डालें हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। फिर आप डालें इसमें हाफ टी स्पून ऑफ चिली फ्लेक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप डालें इसमें हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर। अब हम इसमें शामिल करेंगे सॉसेस। सो फर्स्ट ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, देन ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून ऑफ चिली सॉस। नाउ ऐड 1 एग। नेक्स्ट आप इस मिक्सचर में डालें 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर, अब आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, हीट ऑयल इन अ पॉट और जो आपके पास सब मैरिनेटेड चिकन है आप उसको फ्राई कर लें। आप इस चिकन को तब तक फ्राई करें जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये फुली कुक हो जाए फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड एज वेल। Fry the garlic. Now add the green chilies and fry them with the garlic. अब आप इसमें प्याज के स्लाइसेस डाल के फ्राई करें। अब आप इसमें हरा प्याज डालकर उसे भी फ्राई कर लें। Now add capsicum and fry that as well.
सम स्पाइसेस। सबसे पहले आप इसमें ऐड कर लें हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट आप इसमें ऐड करें हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून ऑफ चिली फ्लेक्स, मिक्स वेल। Time for some sauces. First of all, add 1 tablespoon of soya sauce. फिर आप इसमें ऐड करें 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, एंड लास्टली 1 टेबलस्पून ऑफ चिली सॉस। मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको डालनी है इसमें 1 कप ऑफ केचप। शामिल करें 1 कप पानी। एट दिस पॉइंट आपने कॉर्नफ्लोर और पानी का एक मिक्सचर बना के इस मंचूरियन में ऐड करना है और ग्रेजुअली ऐड करना है और साथ साथ मिक्स भी करते जाना है। इस स्टेज पर आप मंचूरियन को थोड़ा सा पकाएं और पकाने के बाद हमारा मंचूरियन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अब आप इसमें डालें जो हमने फ्राइड चिकन किया था वो आप इसमें शामिल कर दें। हमारा मंचूरियन रेडी हो चुका है और अब एग फ्राइड राइस को प्रिपेयर करने के लिए आप 2 अंडों को फ्राई कर लें। Eggs are fried, set them aside। और अब जो हमारा रिमेनिंग ऑयल है उसमें आप फ्राई कर लें लहसुन और हरी मिर्चें। Now add the green onions and fry them। अब आप इसमें कैबेज, कैरेट्स, शिमला मिर्च और मटर ऐड कर दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करें।
salt. Now add half teaspoon of black pepper. और आखिर में आप इसमें ऐड करें 2 टीस्पून्स ऑफ चिकन पाउडर। अब आप इसमें फिर से सॉसेस ऐड करें और सारी सॉसेस 1 टेबलस्पून इसमें जाएंगी। Looks so beautiful, especially because of the colorful vegetables। और इस पॉइंट पे फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल बॉईल करने सबको आते हैं, सो इसी वजह से हमने ये नहीं दिखाए। अब हम इसकी सिमलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास बॉइल्ड चावलों के ऊपर आपने डालने हैं बॉइल्ड पोटैटोज और इसके ऊपर आप डालने हैं फूड कलरिंग, येलो या ऑरेंज कोई सी भी आप फूड कलरिंग ले सकते हैं। और उसके ऊपर आपने एक लेयर लगा देनी है वेजिटेबल्स की जो हमने फ्राई की थी। थर्ड लेयर आप इस पे अंडे की लगा दें जो हमने फ्राई किए थे। अब इस सारे प्रोसेस को आप दोबारा रिपीट कर लें। लास्ट लेयर आप धनिया और हरी प्याज की लगा दें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब आप इसमें दम लगा दें। और यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब आप इसको अच्छे से टॉस कर लें। हमारी आज की रेसिपी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी या नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दीजिएगा एक बहुत बड़ा थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू नीड मोर रेसिपीज लाइक दिस। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।